Hello, Assalamu alaikum. I'm Dr. Zeba Hassam with another topic of your topic of blood, that is plasma proteins and hemoglobin. So today we are going to discuss how the hemoglobin is formed and how the plasma proteins function. So let's start with plasma proteins. Plasma proteins are the important components that normally stay in the plasma where they perform many valuable functions. Functions of plasma protein. Number one, unlike other plasma constituents, they are dissolved in the plasma water. Plasma proteins are dispersed as a colloid. As they are the largest of the plasma constituents, plasma proteins usually do not exit through the narrow pores in the capillary walls to enter the interstitial fluid. So they remain in the vessels. By their presence as a colloid dispersion in the plasma and their absence in the interstitial fluid, plasma proteins establish an osmotic gradient between the blood and the interstitial tissue. The colloid osmotic pressure is the primary force preventing excessive loss of plasma from the capillaries into the interstitial fluid and thus helps maintain plasma volume. So plasma proteins do not exit out of the capillary pores and they establish a pressure which prevents the leakage of plasma into the interstitial fluid, right? Now number two, proteins are partially responsible for plasma capacity to buffer changes in the pH. There are three groups of plasma protein. Number one is albumin, two globulins, three fibrinogen. So let us discuss separately about albumin first. Now, albumins are the most abundant plasma proteins, contribute most extensively to the colloid osmotic pressure by virtue of their numbers. They also non-specifically bind many substances that are poorly soluble in plasma, such as bilirubin, bile salts, penicillin for transport in the plasma. Then globulins, there are three subclasses of globulin. First is the alpha globulin, then beta globulin, third is the gamma globulins. Like albumin, some alpha and beta albumins bind poorly water-soluble substances for transport in the plasma, but these globulins are highly specific as to which passenger they will bind and carry. For example, thyroid hormones, cholesterol, and iron. Then many of the factors involved in blood clotting process are alpha or beta globulins. So when we will study platelet and clotting, then we will study in detail the function of fibrinogen. Blood clotting. Number three, inactive circulating proteins which are activated as needed by specific regulatory inputs belong to the alpha globulin group. Alpha globulin angiotensinogen is activated to angiotensin, which plays an important role in regulating salt balance in the body. So when we will study blood pressure regulation, then in detail we will study about angiotensinogen and angiotensin. Number four, the gamma globulins are immunoglobulins. Immunoglobulins, they are antibodies which are crucial to the body's defense mechanism. And when we will study white blood cells, then we will study in detail about the gamma globulins that are the immunoglobulins or antibodies. Number three, this is fibrinogen, type of plasma protein. Fibrinogen is the key factor in blood clotting. Plasma proteins are synthesized in the liver with the exception of gamma globulins, which are produced by lymphocytes, one of the types of white blood cells. तो जब हम white blood cells पढ़ेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे gamma globulins को तफसील से, ठीक है? Now we come to the hemoglobin. Synthesis of hemoglobin begins in the erythroblast stage and continues even in the reticulocyte stage of the red blood cells. Therefore, when reticulocytes leave the bone marrow and pass into the bloodstream, they continue to form minute quantities of hemoglobin for another day or so until they become mature erythrocytes. Now you have to see how this hemoglobin is formed. So what happens? 2-succinyl coenzyme A, which are formed in the Krebs cycle, they combine with 2 glycine molecules to form a pyrrole.
they form a compound that is known as pyrrole. Pyrrole consists of 2 succinyl CoA plus 2 glycine molecules. Now what happens that 4 pyrrole compounds combine together and form protoporphyrin 9. Protoporphyrin 9 then combines with iron to form heme. Now heme plus a polypeptide chain, that is globine, combines with heme and it forms hemoglobin chain, alpha or beta. 4 hemoglobin chains, they combine together to form hemoglobin molecule. Next step is 2 alpha chain and 2 beta chains. When they combine, they form adult hemoglobin that is designated as hemoglobin A. Right? So you have to memorize this. Hemoglobin, there are several slight variations in the different subunit hemoglobin chains depending upon the amino acid composition of the polypeptide portion. The different types of chains are designated as alpha chains, beta chains, gamma chains and delta chains. But normal hemoglobin of adult hemoglobin A consists of 2 alpha chains and 2 beta chains, right? Now hemoglobin A, the most common hemoglobin in the adult human being is hemoglobin A, which is combination of 2 alpha chains and 2 beta chains. Because each hemoglobin chain has a heme group containing an atom of iron, and as there are 4 hemoglobin chains, so 4 iron atoms are there in each hemoglobin molecule. समझ में आया? 4 जो के चेन्स हैं तो हर चेन में एक एटम मॉलिक्यूल होगा, तो फिर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे आयरन के एटम्स. कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ही ये है हीमोग्लोबिन का, कंबाइन करती है ये. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज इट्स एबिलिटी टू कंबाइन लूजली एंड रिवर्सिबली विद ऑक्सीजन. रिवर्सिबल क्यों है? लंग एल्वियोलाई में जाएंगे राइट सेल, वहाँ पे ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे, फिर जब टिश्यू में आएंगे तो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, तो रिवर्सिबल और लूज कॉम्बिनेशन होता है इसका. ठीक है. ऑक्सीजन डज नॉट बिकम आयोनिक ऑक्सीजन बट इज कैरीड एज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दैट इज कंपोज्ड ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स. O2 कहते हैं ना, तो 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं. अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नो आयरन इज नीडेड फॉर हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म, तो यू मस्ट नो व्हाट इज आयरन मेटाबॉलिज्म. टोटल क्वांटिटी ऑफ आयरन इन द बॉडी एवरेजेस 4 to 5 grams. अब ये किस किस फॉर्म में होता है ये सारा 4 to 5 ग्राम आयरन? 65% is present in the form of hemoglobin, 4% is present in the form of myoglobin जो मसल्स में है, 1% is present in the form of heme compound that promote intracellular oxidation, then 0.4% is combined with protein transferrin, and 15 to 30% mainly in the liver, stored mainly in the liver as ferritin. ठीक है. तो ये कहाँ पे ये होता है? सबसे ज़्यादा देख लें हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन ही होता है. अब कैसे ट्रांसपोर्ट होता है आयरन जब एब्जॉर्ब हो जाए? तो व्हेन आयरन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टीन इलियम, it combines with a protein that is known as apotransferrin to form transferrin, which is then transported into the plasma. It can be released into the tissues as required. तो जो आयरन प्लाज्मा में है वो एपोट्रांसफेरिन के साथ कंबाइन करती है. जब कंबाइन करती है तो उसके कहते हैं ट्रांसफेरिन, और इसी फॉर्म में वो प्लाज्मा में होती है. जहाँ पे आयरन चाहिए होता है उसको रिलीज कर देती है ट्रांसफेरिन. एक्सेस आयरन इन द ब्लड इज स्टोर्ड इन द लिवर हेपेटोसाइट, जो लिवर के सेल्स हैं, एंड लेस इन द रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स ऑफ द बोन मैरो. ये हम पूरा सिस्टम रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स का पढ़ेंगे जब हम इम्यूनिटी पढ़ रहे होंगे. ठीक है. In the cell cytoplasm, iron combines with the protein apoferritin to form ferritin. This iron stored as ferritin is called storage iron. ठीक है. तो पहले ब्लड में से ख़त्म होता है आयरन, अगर आयरन एब्जॉर्प्शन रुक जाए या न्यूट्रिशन ख़राब हो. फिर उसके बाद जब आयरन वहाँ ब्लड में पेरिफेरल ब्लड में ख़त्म होने लगता है, तो फिर कहाँ से आता है? स्टोर्ड एज फेरेटिन रिलीज करने लगता है लिवर से. ठीक है.
Then smaller quantities of iron in the storage pool are an extremely insoluble form called hemosidrin. अच्छा, एक तो soluble फॉर्म में होता है वो है फेरेटिन, और एक insoluble फॉर्म में है थोड़ी क्वांटिटी, उसको हीमोसिड्रिन कहते हैं. When iron becomes low in plasma, some iron in ferritin storage pool is removed and transported in the form of transferrin in the plasma to areas of the body where it is needed. Transferrin molecules bind strongly with receptors in the cell membrane of the erythroblast in the bone marrow. यानी erythroblast स्टेज में बोन मैरो में जो होते हैं सेल्स, वो एंडोसाइटोसिस के जरिए ट्रांसफेरिन से आयरन ले लेते हैं, ठीक है, जब हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस शुरू होती है. Then along with its bound iron, it is ingested into the erythroblast by endocytosis. Transferrin delivers iron directly to the mitochondria where heme is synthesized. लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, अब देखें कितनी देर तक आरबीसी रहता है हमारे पेरिफेरल ब्लड में. लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज इज 120 days, आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड. द हीमोग्लोबिन रिलीज फ्रॉम द सेल इज इंजेस्टेड बाय द मोनोसाइट मैक्रोफेज cells. Their iron is liberated and stored mainly in the ferritin pool to be used as needed for the formation of new hemoglobin. Daily loss of iron देखिए कितना है. A man excretes about 0.6 milligram of iron each day, mainly into feces. Additional quantities of iron are lost when bleeding occurs. अगर कोई occult या accidental या कोई disease की वजह से bleeding हो रही हो, cancer हो, स्टमक का या इंटेस्टीन का, तो मैन कैन हैव ब्लीडिंग, और अदरवाइज कोई एबनॉर्मेलिटी हो तो. बट फॉर अ वुमन एडिशनल मेंस्ट्रुअल लॉस ऑफ ब्लड ब्रिंग्स लॉन्ग टर्म आयरन लॉस टू एन एवरेज ऑफ अबाउट 1.3 milligram पर डे. तो दैट इज़ वाई, क्योंकि वुमन हैव देयर menstrual cycle every month, so they lose iron, right? So women are more prone to develop iron deficiency anemia, isn't it? And they have pregnancy also, so it is additional burden to become deficient in iron. Regulation of total body iron. When the body has become saturated with iron so that all apoferritin in the form of storage area is already combined with the iron, the rate of additional iron absorption from GIT becomes decreased. अब देखें अल्लाह मैंने इतना इसको बैलेंस करने के लिए अच्छा वो करा है कि एब्जॉर्प्शन ही फिर रुक जाती है. अगर एपोफेरेटिन कंबाइन कर गई ज़्यादा और फेरेटिन भी हो गया और ब्लड में भी इनफ है, तो ख़ुद ब खुद जो है ना नेगेटिव फीडबैक से इलियम से कम एब्जॉर्ब होने लगता है आयरन. Conversely, when iron store becomes depleted, the rate of absorption is greatly accelerated, probably 5 or more times than normal. ठीक है, तो इसी तरह फिर अगर कमी होती है तो वो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है. Lifespan, as I have told you, lifespan of RBC is 120 days, although they have no nucleus, mitochondria or endoplasmic reticulum, but they do have cytoplasmic enzymes. एक तो हमने पढ़ा था ना कौन सा एंजाइम था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज था. Once the red cell membrane becomes fragile, the cells rupture during tight spot of circulation. Many of the red cells self-destruct in the spleen. तो spleen में ये destroy होते हैं. डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन. अब ये भी देखें, अगर हीमोग्लोबिन, ज़ाहिरी बात है कि जब आरबीसी रप्चर होगा तो हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाएगी, वो डिग्रेड होगी. फिर व्हेन रेड सेल्स बर्स्ट एंड रिलीज हीमोग्लोबिन, द हीमोग्लोबिन इज फैगोसिटाइज्ड बाय द मैक्रोफेजेस ऑफ कपर सेल्स ऑफ द लिवर and macrophages of spleen and bone marrow. During next few hours to days, macrophages release iron from hemoglobin and pass it back into the blood, so to be carried by transferrin either to the bone marrow for production of new RBCs or to the liver and other tissues for storage in the form of ferritin. ठीक है. The porphyrin portion of the hemoglobin molecule is converted by the macrophage through a series of stages into the bile pigment that is known as bilirubin, which is released into the blood and later removed from the body through the liver and it is excreted into the bile. ओह ख़त्म हो गया. ओके, तो ये आया समझ में आपको. प्लाज्मा प्रोटीन्स के फंक्शन, हीमोग्लोबिन,
हीमोग्लोबिन कैसे सिंथेसाइज हो रही है, ये सब कुछ आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आयरन मेटाबॉलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको आगे हम एनीमिया पढ़ेंगे तो वो भी आपको आ जाए। ठीक है, सो इट्स ओवर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू, खुदा हाफिज़।